Once again, I welcome you in my class, the chapter second, and today we will be learning about the reproduction through the different part of the plant. You can find these topics from page number 18, 19, and 20 in your book. Okay, and I hope you will find it interesting. Now let's proceed. Okay. Uh, So reproduction in plant through stem, root, and leaves. In our last class, what we have seen? We have seen the reproduction in plant take place with the help of seed. So is there only way that plant reproduce through the seed? You ask the question with yourself. Is there only way that plant reproduce through seed? No. Plant can reproduce through the different part of the plant. Okay. This is the question you ask with yourself, that whether is it possible to grow some plant without seed? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सीड नहीं होता है, ठीक है? तो बताओ, तो सोचो, जिस प्लांट में सीड नहीं होता है तो क्या वो प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा? तो आस्क इट विथ योरसेल्फ, राइट? So we get the answer that no, the plant where there is no seed, they can reproduce through their different part of the bodies. Okay, they can reproduce through different part of bodies. The different part of the plant include they include stem, they include root, and they include leaves. Okay, root, stem, leaves. These are the some of the part of the plant. Now briefly when we see, जब हम देखेंगे तो body parts या plant का body part या animal का body part is categorized into two parts. Body part categorized into two parts. One is general body, general part, somatic part जिसको हम लोग कहते हैं, somatic part, right? Somatic part का मतलब body part, general body part. दूसरा होता है gametic part, gametic, ठीक है? Gametic का मतलब which is meant for the reproduction, right? So gametic part of the plant include flower and fruit. Gametic part include flower and fruit. Okay. So gametic parts include flower and fruit. And so far the somatic part is included. Somatic part is concerned, it includes stem, root, and leaf. Right. So we will see how plant reproduce through the vegetative part. Okay, somatic part is also called as vegetative part. Okay, vegetative part. Somatic part is also called as vegetative part. So when we see the part of the plant or the part of the animal, the entire body part is classified into two parts, that is vegetative part and gametic part. Vegetative part is also called as somatic part, matlab general body part, and gametic part means the part of the body which is meant for the reproduction, right? So the part of the plant which is responsible for the reproduction, that is flower and fruit. So we are not concerned in this topic, we are not concerned about the reproduction in plant through gametic part. मतलब flower और fruit से रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट, राइट? I hope the topic which we are going to read that is crystal clear to you. Let's proceed further, right? Let's see. Now, reproduction in plant through stem, root, and leaves. You can see here, plant reproduce through seed. You pretty know, we have discussed this already. But the question which I have asked you,
It is again once again before you, but are only seed responsible to produce new plants. Okay, definitely. What will be your answer? Right? You can you can answer it in the chat mode. You can answer it in the chat mode. I am enabling the chat mode. You can answer it in the chat mode. You can make your answer through the chat mode. So most of you are saying yes, and most of you are saying no. Let's now, before we should take up before I should give any comment on your answer, let's look up this presentation. Have you seen potato? When you will see potato, when you will see potato, you will find this type of eyes in the potato. Okay, this type of eyes. Potato में ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में होते हैं, ठीक है. When you will, so when you see the potato, you must be seeing the eyes of the potato. Okay, now now potato has got eyes just like us, but does these eyes perform the same function as that of eyes of us? जैसा हमारा आंख है, क्या पोटैटो का भी आंख जो होता है इसी तरह का फंक्शन करता है? तो दैट विल बी योर आंसर, नो. उस पोटैटो के आंख से क्या निकलता है? देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा छोटा छोटा चीज निकलता है, ठीक है, ये ऐसा निकलता है, पोटैटो के आई से ऐसा छोटा छोटा निकलता है. अब इससे क्या होता है? इससे पोटैटो में देखो क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, ठीक है, and this is called green bud, and it develop into new plant. Now you can see here once again the picture is before you. Now पोटैटो में जो जो आई हुआ, उस आई से क्या निकला? पोटैटो में जो आई होता है उस आई से निकला, देखो यहाँ पर एक नया ये निकला, नया प्लांट निकला, ठीक है, नया प्लांट निकला. इस प्लांट में देखो यहाँ पर रूट है और यहाँ पर ऊपर में शूट है. तो कोई इस पोटैटो में जो ऐसा ऐसा आई होता है इसी में से निकलता है, ठीक है. तो पोटैटो विच इज जनरली दिस इज द रूट पार्ट, राइट. तो what you have seen, what you have understood, we have understood that the eyes of potato is responsible for the reproduction, right? Eyes of potato is responsible for the reproduction. Now the potato, which was the stem part, and using that stem we have seen that potato reproduce. How potato reproduce? Potato reproduce through the stem. Okay, the potato has got the eyes, potato has got the eye, and using that eyes it reproduce. Okay, using that eyes it reproduce. Now similarly you can see the ginger, rose and sugar cane, all of these also reproduce through the stem. Now you can see we cut the rose and we plant the stem and we plant it, we see that the new plant comes out. I hope it is clear to you. Now similarly you can see that now carrot, turnip and radish, okay, all these plants they grow and develop through root, ठीक है. अब यहाँ पर ये कैरोट है, टर्निप है, बीट है, ये सब रूट से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो स्टेम का भी हम लोग देखा, रूट का भी देखा. अब देखो यहाँ पर अभी इसको कट कर दिए, गाजर अभी बाजार में मिल रहा है. व्हाट यू कैन डू दिस, you can do this activity in your home also. You can do this activity in your home also. You will take a carrot, okay, and you will cut it and you will plant it.
you will find that a new plant comes out from the root from that carrot. Okay, so what we have seen, this is the reproduction through the root of the carrot. ये गाजर जो रूट से रिप्रोड्यूस किया, ठीक है. नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू. Now, similarly, you can see some of the plant which reproduce by the leaf. This type of plants are bryophyllum plant. Okay, you can see the plant reproduce through leaf. Bryophyllum का एक plant है, वो स्कूल में भी ये plant है. ठीक है, you can find this type of this plant even on the Ramshila hill of your district of your native place. Okay, this is available in a lot of bryophyllum plants are available on the Ramshila hill. You can go there and you can see. Even it is available in the garden of your school also, right? You will see that plant. You can see that this is a bryophyllum plant. Okay, this is a bryophyllum plant and it reproduces through the leaves. अब क्या होता है कि देखो इसके लीफ के मार्जिन में, ठीक है, लीफ का जो ये किनारे किनारे में देखो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा प्लांट यहाँ पर है. अब ये क्या होता है, बाद में ये अलग होकर ये नीचे गिर जाता है और इससे नया पेड़ बनता है, नया ब्रायोफाइलम का प्लांट डेवलप कर जाता है. ठीक है, तो ऐसे गिरा और गिरने के बाद जो है उससे नया प्लांट बन जाता है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसको कहते हैं फर्न. अभी बताओ कि ये प्लांट तुम लोग कहाँ देखते हो, वेयर यू सी दिस प्लांट. ये प्लांट अभी तुम लोग कहाँ देखते हो, दिस इज फर्न. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं. इस प्लांट का नाम है फर्न और ये स्पोर से ग्रो करता है. ये स्पोर से ग्रो करता है. सबसे पहले तो बता दें कि ये कहाँ मिलता है. ये प्लांट को तुम देखोगे दिस इज ऑर्नामेंटल प्लांट है. आजकल जो बुके बनता है, जो गुलदस्ता बनता है, जो शादी ब्याह में जो गाड़ी जो कार वगैरह जो डेकोरेट होता है उसमें ये प्लांट दिखाई देता है. ये जनरली बुके वगैरह बनाने के काम में आता है. और ये जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर की ओर जाते हैं तो ये फर्न के लीफ का साइज बड़ा होते जाता है और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वैसे इस पेड़ अगर जो नीचे में मिलेगा तो इसका पत्ते का साइज छोटा होगा. ठीक है, ड्यूरिंग माय स्कूल डेज एंड हर्बेरियम कलेक्शन वी हैव कलेक्टेड इट on the ground and as well as on the mountain of Parasnath hill. वहां भी हम लोग इसका कलेक्शन किए. दोनों में अंतर हम लोग ये देखे कि जो ग्राउंड पर जो मिलता है उसका पत्ता छोटा होता है और ऊपर में जो मिलता है उसका पत्ता और बड़ा होता है. इसके पत्ते का और खासियत क्या है कि अभी स्क्रीन पर देख रहे होगे कि स्पोर्स होता है इसके पत्ते में. दीज आर द स्पोर्स. ओके, ये क्या है, दीज आर स्पोर्स. ठीक है, ये इसके पत्ते में स्पोर्स होता है और जब हवा चलता है तो ये स्पोर गिरकर झड़ जाता है. गिरकर झड़ता है या हवा से उड़कर दूसरे जगह चला जाता है और इससे नया फर्न का बनता है. देखो, यू कैन सी इट इज फॉलिंग और ब्लोइंग थ्रू द बेंड एंड germinate into a new plant. Now, finally, what we have concluded? We have concluded that plant can reproduce even without seed as well. I hope you would have understood it. ठीक है, plant can reproduce through seed as well. Okay, I hope it is clear to you. You can refer to the page number of your book. Page number, it is 18. You can see vegetative reproduction. What is vegetative reproduction? The reproduction which take place through the vegetative part of the plant. I have already told you that plant have two types of plant. One is vegetative part, matlab general body part, vegetative part, and second is gametic part. Okay, तो द रिप्रोडक्शन. अब गेमेटिक पार्ट में क्या क्या आ गया, फ्लावर आ गया और फ्रूट आ गया. ठीक है, और वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ गया, रूट आ गया, स्टेम आ गया और लीफ आ गया. ठीक है, लीफ आ गया. ठीक है, द रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस टू द vegetative part of the plant, this is called vegetative reproduction. This term is clear to you. ठीक है,
Now it is of great importance because it is easier and faster method of increasing the number of plant. It also help to grow the plant like banana which bear no seed. Now question arises, why vegetative reproduction is important? Vegetative reproduction is important in the case where the plant do not have got the seed. Okay, I hope it is clear to you. Now when you come here, reproduction through the underground steam. Now through the underground steam, we have seen that banana, we have seen the banana, ginger, etc. All this ginger and potato, all this reproduced through the underground steam. Now the next is the reproduction by the steam cutting, right? Reproduction through the steam cutting. Okay, you can see here the cutting of the steam, like in the case of rose. You have seen that how the rose, we cut the stem, we have cut the stem of the rose and we have planted in the earth, and finally new plant comes out. Now the next it is reproduction through the root. The reproduction through the root. Okay, reproduction through root, when the fleshy root of some part like dahlia and asparagus are placed in water, very many roots appear. ठीक है, डहलिया, अभी डहलिया का पेड़ अब देखो खत्म हो गया, अभी सीजन खत्म हो गया है, तो देखो उसको मिट्टी को अगर कोड़ोगे तो उसमें से डहलिया का वो रूट निकलेगा और उससे भी नया निकलता है स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग शकरकंद कहते हैं, स्वीट पोटैटो, ऑल दे रिप्रोड्यूस थ्रू द रूट. ठीक है, I hope it is clear. Now move to the next page. You can see bryophyllum. I have given you the example of bryophyllum, which is meant for the which reproduces by the leaf. This was all about the reproduction of plant by the different body part. I hope it would be clear to you.